Welcome to this new tutorial. In this tutorial we shall talk about the key features of collectivized states. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे the key features of collectivized states. First, public ownership. In collectivized state, the state or collective entity owns and controls the means of production rather than private individuals or corporation. Thus, this is often involves nationalization or socialization of industries, agricultures, and natural resources. So the first features of collectivized or socialized state is public ownership. So as we discussed earlier in the concept of collectivized state, the public ownership is one of the most important ingredient of understanding collectivized state. And here, in public ownership, the industries, the means of production and distribution are basically controlled by the collectivized state. It is a public ownership. That means there are no private individuals or corporation. The other point to understand here that when we talk about collectivization of a state or controlling the means of production, what it means basically is nationalization or socialization of industries, agriculture and all the natural resources which state owns. And therefore, public ownership is one of the most important feature to understand collectivized state or socialized state. पब्लिक ओनरशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कलेक्टिवाइज स्टेट में. अगर आपको कलेक्टिवाइज स्टेट को समझना है तो उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पब्लिक ओनरशिप. दैट मीन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज़ हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो, ये सारे स्टेट कंट्रोल करेगी. इसका मतलब यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल को या फिर कॉरपोरेशन को कोई भी स्कोप नहीं है. एंटायर रिसोर्सेज जो स्टेट के रहेंगे वो पब्लिकली ओन रहेंगे, मतलब स्टेट उसको पूरा कंट्रोल करेगा. सो दैट्स अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक ओनरशिप. सेकेंड पॉइंट इज सोशल सर्विसेज. Collectivized state often provide a wide range of social services and benefits to its citizens, including healthcare, education, housing, and public transportation. These services are funded through taxation and government spendings, and they aim to ensure universal access and social equality. Second very important point is social services. The collectivized states are known for providing social services because the resources are owned by public, resources are owned by state itself. So it is a state responsibility to make sure that the wide ranges of social services and benefits are provided to its citizens. And what are those social services? Those are basically providing good healthcare, education, housing facilities, and public transportation. These are the basic needs of people or citizens living in collectivized state or socialized state, and it is a state responsibility to provide these basic needs to its citizens. So how does state provide these services? So these services are basically provided through taxation and government spending. So state collect taxes and later the same taxes are being spent back on people. And the entire aim of these social services is basically to have universal access and social equality among the society. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो है सोशल सर्विसेज. जैसे हमने देखा कि सारी रिसोर्सेज एक स्टेट कंट्रोल करती है. आपके एग्रीकल्चर हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर इंडस्ट्रीज़ हो, ये पूरे स्टेट कंट्रोल करती है इन कलेक्टिवाइज स्टेट. इसका मतलब यही है कि जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों के लिए या फिर सिटीजन्स के लिए, ये स्टेट का दारोमदार रहेगा, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. और इसीलिए स्टेट
जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो होती है हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन, हाउसिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड करती है लोगों के लिए, इसकी फंडिंग जो आती है वो थ्रू टैक्सेशन आती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। सो सरकार या फिर स्टेट बेसिकली लोगों से टैक्स लेती है, उस जमा किए हुए टैक्स को वापस थ्रू सोशल सर्विसेज लोगों को दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसका एम एक ही है कि सारे लोगों को एक यूनिवर्सल एक्सेस मिले टू ऑल दिस सर्विसेज एंड एक सोशल इक्वालिटी को मजबूत बनाए। So this is the second very important point to understand the key features of collectivized state. Third is ideological framework. Collectivized state often guided by socialist or communist ideologies, which prioritize collective ownership, social justice, and solidarity over individual profit and competition. These ideologies advocates for the elimination of class distinction, exploitation and inequality through collective ownership and control of resources. So third very important aspects of understanding collectivized state is ideology. And most of the time, and often I would say, that all the collectivized states are always guided by socialist ideology or communist ideology, because the aim of this socialist or communist ideology is basically prioritizing the collective ownership. As I said already, there is nothing called individual ownership or corporation ownership in communist state या फिर socialist state. It is all about collective ownership. It's all about providing social justice and solidarity over individual profit. That means the individual profit is not being taken into consideration. Rather, it is a collective welfare or collective ownership is more important. And therefore these ideologies advocate basically the elimination of all sort of a class distinction, all sort of an exploitation which normally takes place in a society or in a state, or all sort of an inequality through collective ownership and control of resources. So therefore ideological framework is another very important point to understand how collectivized state function. And the core point of understanding the ideological framework is all about collective ownership, collective control over the resources in order to bring some sort of a social justice in the state. तीसरा जो बहुत important point है to understand the feature of collective state is ideological framework. जो आइडियोलॉजी रहती है कलेक्टिव स्टेट में वो बेसिकली या तो सोशलिस्ट रहेंगे या फिर कम्युनिस्ट रहेंगे, और इन दोनों आइडियोलॉजीज़ का जो प्रायोरिटी रहता है वो है कलेक्टिव ओनरशिप। मतलब यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं रहेगी, सोशल जस्टिस रहेंगे एंड इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा बल्कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस मिलेगा। एंड देयरफॉर सॉलिडारिटी ओवर इंडिविजुअल प्रॉफिट and competition is one of the very important aspect of understanding collectivized state. और ये जो आइडियोलॉजी रहती है सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, इनका एक ही मकसद रहता है कि वो क्लास को एलिमिनेट करे। एनी सॉर्ट ऑफ अ क्लास डिस्टिंक्शन अगर है सोसाइटी में उसको एलिमिनेट करे और सबको एक स्तर पर लाकर खड़ा करे। कोई भी अगर एक्सप्लॉयटेशन हो तो उसको स्टॉप करे, और जो भी इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में या फिर स्टेट में उसको एलिमिनेट करे थ्रू कलेक्टिव ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस। सो तीसरा जो पॉइंट है वो बेसिकली आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क का है। नेक्स्ट फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कलेक्टिवाइज्ड स्टेट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज टिपिकली centralized under the authority of the state, with government agencies responsible for setting production targets, allocating resources, and coordinating economic activities. Central planning aims to achieve specific social and economic goals such as equitable distribution of wealth,
full employment, and industrial development. The fourth very important point, which will help us again to understand what is collectivized state, is all about centralized planning. In collectivized state or या फिर in socialist state, it's all about centralized planning, and economic planning plays a very very important role in collectivized state. So what does economic planning does? It is typically a centralized under the one authority with various government agencies which are actually responsible for providing the production targets, how the resources will be allocated, how the coordination of economic activities would be done. So these all have been planned centralized in the economic planning of the state, and therefore central planning basically aims to achieve specific social and economic goals. Every state, every collectivized state, every socialist state, every communist state, they have certain targets to achieve, and this target is for basically the welfare of entire society, and therefore the specific targets are socio-economic goals. And what are those socio-economic goals? Is basically equitable distribution of wealth. Whatever wealth state has generated, it has to be redistributed among the people through various schemes and various social policies, as we already discussed. So that is how equitable distribution of wealth is carried out. Providing full employment, that's another very important responsibility of collectivized state. And industrial development. So in short, these centralized goals are being achieved through equitable distribution of wealth, full employment, and industrial development. And for that, planning is very important. And here in collectivized state, it is all about centralized planning. Everything is planned at the center, and then the responsibilities are being then delegated to each and every agencies to make sure that they achieve the set goal for the state. चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलेक्टिवाइज स्टेट का, वो है सेंट्रलाइज प्लानिंग. इन कलेक्टिवाइज स्टेट या फिर सोशलिस्ट स्टेट या फिर कम्युनिस्ट स्टेट में जो प्लानिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है, राइट. दे हैव सर्टेन गोल्स टू अचीव, और इसीलिए जो सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग रहती है एंड उसके जो एजेंसीज रहती है उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, और वो टारगेट अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन को बनाया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्मूथली कैरीड हो जाए. और जो सेंट्रलाइज जो प्लानिंग रहती है इकोनॉमिक्स की, उसका जो एम रहता है वो बेसिकली सोशो इकोनॉमिक गोल्स है. और ये सोशो इकोनॉमिक गोल्स बेसिकली क्या होता है, जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है स्टेट में उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच में. और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है वो होता है थ्रू वेरियस स्कीम्स, वेरियस पॉलिसीज फॉर द पब्लिक. इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना लोगों के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्टिवाइज स्टेट में. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे गोल्स होते हैं सोशो इकोनॉमिक गोल्स, ये तय होता है सेंट्रलाइज प्लानिंग में. So the most important aspects of understanding collectivized state is that they have something called centralized planning. सारा जो प्लान होता है वो ऊपर प्लान होता है सेंट्रलाइज्ड में, और उसके बाद उसको नीचे डेलीगेट किया जाता है टू एवरी agencies to meet their specific goals. So this is about the fourth point, centralized planning. Fifth very important point is state intervention. Now, the government in collectivized states plays an active role in regulating market, setting prices, and controlling economic activities to achieve social and economic objectives. Thus, state intervention may include subsidies, tariffs, export and imports control, and regulation on labor and production. So the fifth very important aspect is about state intervention, that in collectivized state or in socialized state, state will always going to intervene.
And the government in collectivized state will actually going to play a very important role as far as regulating the market. Market is something which is very, very important, because end of the day, prices has to be set properly. There has to be control over the economic activity. And state believes, or the government believes in collectivized state, that to achieve socio-economic objective, government must intervene in the market as far as setting the prices and controlling the economic activities. And how does state intervene? State basically intervene through providing subsidies, tariff controls, export and import controls, and providing various regulations on labor and production. So through these intervention, state make sure that they achieve the social and economic objective, and thus state intervention is another very important feature of अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिवाइज स्टेट। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेट इंटरवेंशन। कलेक्टिवाइज स्टेट में हमेशा स्टेट या फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, और ये स्टेट इंटरवेंशन जो रहेगा वो बेसिकली टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। स्टेट का मानना यही है कि मार्केट में प्राइस सेट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहेगी उसमें स्टेट का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और स्टेट के बिना मार्केट रेगुलेशन नहीं हो सकता, प्राइस सेटिंग नहीं हो सकता, और जो एक्टिविटीज़ होती है मार्केट में वो भी नहीं हो सकती। इसलिए स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है या फिर एक्टर है इन कलेक्टिवाइज स्टेट। और ये जो सारी चीज़ें रहती है इंटरवेंशन, ये स्टेट कैसे करती है? ये बेसिकली करती है बाय प्रोवाइडिंग subsidies, tariff control, export and import controls, and enacting regularly laws and regulations with regard to labor and production. So state intervene करती है, government intervene करती है in collectivized state only through these principles, by providing subsidies, tariff, export and import control, and the regulations on labor and production। और इसीलिए स्टेट इंटरवेंशन या फिर गवर्नमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इन कलेक्टिवाइज स्टेट। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान्ड इकोनॉमी। इन कलेक्टिवाइज स्टेट्स टिपिकली operates under planned economies, where production decisions are based on central directives rather than market forces. Thus, economic plans sets targets for production level, investment priorities, and resources allocation with the aim to achieve social and economic development goals. So the last very important point which actually help us to understand what exactly the collectivized state is the planned economy. In collectivized state या फिर in socialized state, you have planned economic concept. The entire economic engagement, entire production decision are planned at the central level, right? The directive comes from the center how the economy will be planned, and not from the market forces. Normally we see that it is the market forces which actually influence the economic planning, whereas here in collectivized state it is other way around. It is these central decision and directives which actually plan the economics as far as production is concerned, investment priorities are concerned, how the resources will be allocated, and all these have been done, as we talked about, is basically to achieve social and economic development goals. And market forces does not have any role in the collectivized state, and therefore corporations and individual holdings does not have any importance. It is all about central control. It is all about getting the directive directly from the center, and therefore planned economy is another important aspect of understanding collectivized state. Last जो point है वो है planned economy. कलेक्टिवाइज स्टेट में जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, जो भी प्रोडक्शन रहेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, या फिर जो भी रिसोर्स एलोकेशन रहेगा, ये सारा सेंट्रल अथॉरिटी का डिसीजन रहेगा। जो इकोनॉमी जो रहती है स्टेट की, वो जो प्लानिंग रहती है इकोनॉमी की, वो पूरी स्टेट सेंट्रल करेगा।
सेंट्रल से अथॉरिटी आएगा, सेंट्रल से आपको डायरेक्टिव मिलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ को सामने रखना है, या फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, चीज़ें, ये पूरा जो डिसीजन रहेगा ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन रहेगा अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी, और इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जो पब्लिक होल्डिंग होती है वहाँ पर कॉरपोरेशन होल्डिंग का कुछ भी रोल नहीं है, इंडिविजुअल होल्डिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। इसलिए पूरा जो रिसोर्सेज रहेंगे स्टेट के, या फिर जो प्रोडक्शन लेवल रहेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये पूरा प्लान्ड रहेगा इन देयर प्लान्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और ये जो पूरी चीज़ें होंगी वो बेसिकली रहेंगी टू अचीव social and economic development goal. So these are all 6 very important features which has helped us to understand what is collectivized state and how collectivized state actually functions. Thank you very much for watching this tutorial, and I will see you soon in next tutorial. Till then, take care.